नेक्स्ट ऑपरेटर इज इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर्स। इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर हमारा सिर्फ चेक करने के लिए होता है कि हमारे पास अगर लेट्स सपोज 7-8,000 लाइंस का प्रोग्राम है और हमने कहीं पहले से क्रिएट कर दिया है F1 ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट क्लास, और हमें अब चेक करना है that if all F1 is already an instance of the first class, then we can check with the help of instance of operator. If brackets F1 dot instance of the class name first round brackets band. If F1 is was already being created, then the answer will be true, otherwise it will be false. Then square bracket. Square bracket is used to declare the arrays. Arrays, I just told you, you are already using this square brackets in main method, that string square bracket args. So square bracket is used where you want to give multiple values. So here in our main method, any value can be printed, any value can be used in any of the calculations. So where you want to depict multiple or number of values, you need to put square bracket. I will tell you how to declare and how we'll be using an array in 10th standard. So for till that time, you need to remember that it is just depicting the individual or the multiple array elements or a collection of elements of the one type. So it is just an square bracket operator used in arrays. So on the next page you can see this full chart is given on page number 75. This is how we can use the precedence. Precedence means like your board mass, you are giving priority to brackets, of, then division operator, then multiplication, then addition, and then subtraction. So we are using it in calculations, that on which priority basis which operator is being calculated first. So in the same way this chart is given, need not to learn all these things, just second block, fourth block, 12th नंबर एंड 13, इन सब की पोजीशंस आपको पता होनी चाहिए कि पहले कौन सा यूज़ किया जाता है. लेट्स सपोज अगर एक एक्सप्रेशन के अंदर प्लस प्लस भी है, माइनस माइनस भी है, तो प्लस प्लस पहले सॉल्व किए जाएंगे, देन यू विल यूज़ द माइनस माइनस फॉर कैलकुलेशंस. देन अगर उसमें पोस्ट इंक्रीमेंट है और प्री इंक्रीमेंट है, उन दोनों की सेम प्रायोरिटी है. Either you can calculate pre-increment operators or post-increment, that will not be the matter, but ये सब प्रायोरिटी. अगर लेट्स सपोज एक ऑपरेशन के अंदर मल्टीप्लाई, डिवीजन, रिमाइंडर ऑपरेटर है, तो सबसे पहले ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन को प्रायोरिटी दी जाएगी, देन डिवीजन एंड देन द मॉडुलस. और कई बार क्वेश्चन आता है विच ऑपरेटर इज बीइंग यूज्ड फर्स्ट इफ टू ऑपरेटर्स आर in the simultaneous parallel in the one expression. So and operator will be given the priority first and then the or operator. Rest of the operators आप देखते रहा करो इस चार्ट को, but need not to learn it, just to understand it. Next is expressions in Java. Expression means एक पूरी कैलकुलेशन होने के बाद हमें किसी वेरिएबल में दोबारा असाइन करना. That means एक full line in which calculation is also there, or you can say a sequence of operators and operands, जिसमें हमारे पास operands भी हैं और operators भी हैं. एक ऐसी line, एक ऐसी sequence जिसके अंदर operators भी हों और operands भी हों, this is known as expression. Now first is assignment statements or assignment expression. This is the simplest form because assignment operator जिसमें यूज़ होगा वो assignment statements हैं, जिसमें हम कोई वैल्यू किसी वेरिएबल को we are going to assign it, right? So we are here 37.75 is being assigned to price variable. This is a simple expression. Then is arithmetic expression. जिस particular expression के अंदर arithmetic operations यूज़ होंगे, that particular line is known as arithmetic expressions. जिसमें हमारे पास रियल, अब रियल है जिसमें हमारे पास कंपोज्ड ऑफ फ्लोट एंड डबल. जिस पर्टिकुलर चीज़ में कोई डिवीजन पॉसिबल है, दैट पर्टिकुलर थिंग इज रियल एक्सप्रेशंस.
मिक्स्ड एक्सप्रेशंस कम्बिनेशन होते हैं जिसमें इंटीजर एक्सप्रेशंस भी हों, मतलब सिंपल मल्टीप्लिकेशंस भी हो रही हैं, और फ्लोटिंग पॉइंट मतलब रियल एक्सप्रेशंस भी यूज़ हो रहे हैं. दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड mixed expressions. Logical expressions. Logical operations are those in which logical operators are being used. These are so simple to learn. Definitions can come. You can give one line definition with one example. Null statement. Any empty statement in Java is called null statement. That's it about the null statement. Need not to learn more. Then is expression evaluation. I just told you that on page number 75, the chart showing you the precedence or the priority, or just like your board mass, you can give round brackets. The moment you will put round brackets, priority will be given to that particular bracket. First you will solve the bracket, then the values will be being used in the calculations. So it is telling you using parenthesis you can change the order of the calculation. Let's suppose this line is there, 5 plus 2 minus 11 into 10 divided by 15. आपको समझ नहीं आ रही कि कौन सा पहले करें, या फिर आप बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग इसको पहले प्रायोरिटी दोगे, देन दिस थिंग विल बी देयर, और प्लस एंड माइनस. बट इफ यू विल पुट brackets, then brackets will be solved first, then this will be solved. So first 5 plus 2 7, 11 into 10 110 divided by 55. So in this way we can change the order of the calculation of the expressions. We can use round brackets to change the order. Now the last topic of this chapter is type conversion. For type conversion, I am going to take examples and I am going to tell you the types of type conversion. Now, first the thing is type conversion word is telling us that conversion of some types, right? Conversion of type means एक टाइप से दूसरी टाइप में चेंज करना. वो दो तरीके से हो सकती है. वन वे इज इम्प्लिसिट एंड अदर वे इज एक्सप्लिसिट. इम्प्लिसिट मीन्स जो ऑटोमेटिकली कंपाइलर करता है, दैट कंपाइलर डज, राइट. नाउ बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस टाइप कन्वर्जन you need to know what are the different data types present in Java. For understanding data types, I am telling you data type means which type of data you want to store in variables. किस टाइप का डेटा हमें कंप्यूटर में फीड करना है, दैट इज़ व्हाट data type. Now data type is broadly classified into primitive and reference. There are two categories, primitive and reference. Now primitive means पुरानी लैंग्वेजेस से आई हुई टाइप्स. जो पुरानी लैंग्वेजेस में भी सी प्लस प्लस में से भी जो टाइप्स थी उन्हीं को यूज़ किया जाता है जावा में. इन्हीं की वजह से जावा 99.9% ऊप्स माना जाता है और 0.01% प्रिमिटिव माना जाता है, बिकॉज वी आर स्टिल यूजिंग 0.01% मीन्स उन्हीं की डेटा टाइप्स को हम यूज़ करते हैं. लेकिन रेफरेंस आर द न्यू डेटा टाइप्स ऑफ जावा जो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बेस बनती हैं. दैट दिस थिंग्स विल बी कवर्ड इन 10th क्लास. बट नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर देयर. 8 में कौन कौन सी. ये जो 4 डेटा टाइप्स हैं, इंट बाइट शॉर्ट लॉन्ग, ये 4 की 4 हमें इंटीजर स्टोर करने में हेल्प करती हैं. इनमें रेंज है, दैट विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट चैप्टर्स. इंट की कुछ रेंज है कि इतने से इतने तक ये इंटीजर स्टोर कर सकती है. बाइट की रेंज है शॉर्ट लॉन्ग. सबसे बड़ी टाइप है लॉन्ग, राइट. सबसे छोटी टाइप है बाइट, देन शॉर्ट, देन इंट एंड लॉन्ग. ये दोनों टाइप हैं फ्लोट एंड डबल फॉर डेसिमल्स. The other type is boolean. Boolean is just to store true or false, and char word is for characters. एक एक सिंगल करेक्टर को स्टोर करने के लिए char डेटा टाइप है. And reference data types are strings, arrays and interfaces. Now integers, decimals and boolean and character, these are the 8 data types. You need to learn it. इनका ऑर्डर है बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर एंड बूलियन. बूलियन लेता है 1 बिट, कैर लेता है 2 बाइट्स,
हर एक करेक्टर 2 बाइट्स में स्टोर होता है. Float is for 4 bytes. Double is for 8 bytes. Int is for 4 bytes. Byte is for 1 byte. Short 2 bytes. Long 8 bytes. ये इनकी स्टोरेज कैपेसिटी है. एक टाइम पे ये कितना डेटा, कितनी नंबर ऑफ बाइट्स स्टोर कर सकते हैं. सो इट इज़ टेलिंग अस फ्लोट एंड डबल 4 and 8 छोटी 4 टाइप्स की 4 बाइट्स स्टोर करती है, एंड देन डबल इज़ बिगर डेटा टाइप. सिमिलर इज़ द केस विद दीज टाइप्स. सबसे छोटी बाइट, देन शॉर्ट, देन इंट एंड लॉन्ग. नाउ दीज आर द डेटा टाइप्स. नाउ विल कम बैक टू टाइप कन्वर्जन. अगर हमें एक टाइप से दूसरी टाइप में चेंज करना हो, दिस इज टाइप कन्वर्जन. नाउ व्हाट इज द एग्जांपल फॉर दैट? फर्स्ट इज implicit typecasting, जो कंपाइलर अपने आप करता है. लेट्स टेक द एग्जांपल. सी हेयर आई हैव टेकन कैर डेटा टाइप, उसका एक वेरिएबल दैट इज ए. नाउ आई हैव स्टोर्ड 1 करेक्टर इन दिस वेरिएबल. 1 करेक्टर मीन्स 2 बाइट्स, राइट. 2 बाइट्स का डेटा इसमें स्टोर हो चुका है. बट आई एम असाइनिंग इन द नेक्स्ट लाइन कि जो भी ए में पड़ा है वो असाइन हो जाए रिजल्ट वेरिएबल में. नाउ इंट इज ऑफ बिगर टाइप. वो कैर टाइप का था, इंट टाइप का नहीं था ए, वो कैर टाइप का था. तो यहाँ पे कंपाइलर उसको अपने आप इंट टाइप में कन्वर्ट कर देता है. दिस इज़ नोन एज इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग. तो अब इसका आंसर इंटीजर में आएगा. हमें आंसर डी नहीं मिलेगा जो ए में पड़ा था, हमें आंसर मिलेगा 100. Now you will search or you will be thinking that why 100 answer. Now let's see another concept. There is a sky value chart. ASCII, American Standard Code for Information Interchange. थ्रू आउट द वर्ल्ड ये चार्ट फॉलो किया जाता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मीन्स इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज. In the very first chapter, I told you that computer understand only 0 or 1. इस फॉर्म में ही डेटा को कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है. बट वी आर राइटिंग इट इन इंग्लिश. सो इफ़ आई विल टाइप हेयर ए हमने की प्रेस की, और यू कैन से हमें अमन प्रेस करना है, राइट. अमन एंटर करना है. इट विल check the characters. It will convert the characters in 0 and 1. तो इसके अंदर हमें कंपाइलर में एक कोडिंग सेट की हुई है. इस चार्ट की हेल्प से, स्काई चार्ट की हेल्प से हमने कोडिंग सेट की है. जितने भी कीबोर्ड पे हमारे पास कीज़ हैं, कोई एंटर की कंट्रोल की, स्पेस बार की, ABC कीज़, एनी अल्फ़ाबेट कीज़, एनी न्यूमेरिकल कीज़, हर एक की के लिए एक कोड रखा गया है. न्यूमेरिकल कोड, एक नंबर रखा गया है. कैपिटल ए का कोड शुरू होता है 65 से, देन B is 66, C is 67, लाइक दिस टिल Z is 90. Similar is the case with small a, 97, B is 98, C is 99, D is 100, like this. Small z is 122. As there are 26 letters in the ABC, so you can count continuity में, right. So A is 97, B is 98, C is 99, D is 100. What we have stored here? D. So D का int value अंदर क्या store हुई है? 100. So the output will be 100. This is how implicit typecasting is done by the compiler. And the next part is explicit typecasting. Explicit typecasting होती है जो यूज़र फोर्सफुली करता है as per the need using this typecasting operator. इसको typecasting operator बोला जाता है. For this I have taken an example. int I, एक वेरिएबल ले लिया int. int की बाइट्स हैं 4 बाइट्स स्टोर करता है. फ्लोट एक वेरिएबल ले लिया f, जिसमें हमने वैल्यू रखी है 3.14. Now, as f is having value 3.14, but my need is to convert f value to integer. In any case, ये
one more thing I want to tell you. In implicit typecasting,